It'll be nice, it'll look bhara bhara. The audience needs to support the performers, so come aage. Thanks. All right. Okay, hi guys. I'm Himangini. I'm a choreographer and a writer. I write about the things that I can't dance, and I dance about the things that I can't write, simply put. So I'm going to be your host for the morning, actually. And I am really excited. I've come to Habitat after really long. It's a very fun stage because a lot of poets come to try out new things, obviously. And so one thing, please encourage all the participants who ever come, not even the participants, just the poets who come here. And please applaud them, click for them, and don't look blank. Even if you don't understand it, just encourage it, okay? And can I know how many people are here as audiences? Wow, that's a good amount of people. Thank you for being here on a Sunday at 12 p.m. Thank you. Give yourselves a round of applause. Okay, so each poet gets 4 minutes, and you will see a light blink before you. Please don't act like you didn't see it, okay? And like, don't continue doing it because that's just turn around, you'll see the light. So that's the light. And that means that you've got 30 seconds left, and then the light stays on, which means your time's up. There's also a timer there for you to actually have a real-time sense of how much time you have left. Okay, all right. So I write about love, obviously. I write about horror. I write about dark poetry. I write about outer space, basically anything that really inspires me. So I'm going to give you a little gist into my world. And I usually start with this poem, and it's called Rainbows. Hopefully, you'll be able to understand me a little better after hearing this. Rainbows. If you could just for once step into my mind, read my thoughts that run as fast as light, know that confusion between how I feel and how I behave, it'll all make sense to you and you'll see the bursting wave. There's a spark somewhere in me that tells me to disobey, to break the rules and create my own way, to walk in silence when I need to hold on, and to cry along when I need to move on. To wake with a smile and sleep with a frown only tells you how this world is to me. It's not gentle, it's not swell, but all I need is a bed to rest. If only you could see the thoughts I project, my mind running free, you'd see how wonderful this world before us could be. There's somewhere in this world where our thoughts collide, where I see yours and you see mine, where blue turns yellow and harsh words turn mellow, where I see you and you see me. There's this world I believe in that exists in my mind, where you and I reunite. Thank you. So, yeah, I hope you got a better sense of me. And I'll keep chatting with you throughout the afternoon. But for our first performer, guys, let's give it up for Rashmi. So, also, to move the mic up and down, you can just do this. Anji, you've got 4 minutes. So guys, give it up for Rashmi. Thank you. Is it working? Yeah, it's working. दोस्तों, मैं सिर्फ हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ज़िंदगी और ज़िंदगी में आए लोगों ने मुझे ढेर सारी कहानियाँ दी हैं. एक छोटा सा वाक्या. जॉब का पहला दिन. उम्मीद से बढ़कर मुझे वेलकम मिला. हर डिपार्टमेंट में गई, हर किसी से मिली, और उसी दिन मेरी मुलाकात हुई दीपाली से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की. दीपाली से मिली तो न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे बचपन के किसी दोस्त से मिलना हो गया हो. इतना अपनापन, इतना प्यार कि बस पूछो मत. लंच टाइम में उसने मुझसे पूछ ही लिया, कहाँ रहती हो? मैंने कहा भाई के साथ हूँ, पर जल्द ही मुझे एकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि भाई बेंगलोर जा रहा है. मेरी ऑफिस वर्ली में थी. और
उसने कहा आजा मेरे पीजी में। उस दिन वर्किंग आवर्स के 2 घंटे बाद मैं दीपाली के साथ थी। देर रात तक हमने बातें की। पता चला दीपाली मैरिड है और उसका हस्बैंड रमेश पहले हमारी ही कंपनी में था, अब गुड़गांव में है। उस दिन मैंने एक बात नोटिस की, दीपाली का लेफ्ट हैंड थोड़ा सा टेढ़ा था। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद मैं शाम को ऑफिस में थी तो उसने फ़ोन किया, रश्मि मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा दर्द दे रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा रुक, मैं भी चलती हूँ। उस रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने पूछ ही लिया कैसे हुआ। उसने कहा देख, 2 साल पहले तक मेरा हाथ भी तेरे हाथ के तरह ही नॉर्मल था, पर एक रोड एक्सीडेंट ने मुझसे 2 चीज़ें छीन ली। एक तो मेरा हाथ और दूसरा मेरा 5 साल का स्टडी बॉयफ्रेंड। मैंने बोला क्या, कौन, रमेश? उसने कहा नहीं, उसका नाम रोहित था। उसने मुझसे ब्रेकअप से इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। मैंने कहा तूने कुछ जवाब तलब नहीं किया, कुछ पूछा नहीं? उसने कहा मैं सिर्फ एक बात उससे पूछना चाहती थी कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? पर मैं उसे अपने गुस्से के लायक भी नहीं समझी। मैंने पूछा फिर रमेश? उसने कहा रश्मि, जब मैं रिकवर कर रही थी ना, मेरे साथ सिर्फ 3 लोग थे, मेरे मम्मी पापा और रमेश। रोज मुझे फोन करता, ऐसा लगता जैसे कलीग है, इसलिए या तो सिंपैथी दिखा रहा है या फिर फॉर्मेलिटी कर रहा है। पर धीरे धीरे पता लगने लगा कि वो सिंपैथी नहीं दिखा रहा था, वो दीपाली को दीपाली से मिला रहा था। कहता तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और कुछ महीनों बाद जब कंपनी ने मुझे वापस बुलाया और रमेश ने प्रपोज किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था। मैंने उससे पूछा दोबारा प्यार कर लिया तूने? उसने कहा, और उसने जो कहा ना दोस्तों, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। उसने कहा रश्मि, प्यार का क्या है, प्यार तो हर किसी से हो जाता है, पर शादी हमेशा उसी से करना जिसकी तू इज्जत करती है। मैं रमेश की इज्जत करने लगी थी। बात कहीं ना कहीं दिल को लग गई और कुछ सालों बाद जब वो मेरी शादी में आई, मुझे देखी, मुस्कुराई। मैं भी उसकी तरफ देखी और मुस्कुराई, जैसे कह रही हूँ देख मैंने तेरी बात मानी, आज मैं उस लड़के से शादी कर रही हूँ जिसकी मैं इज्जत करती हूँ। क्योंकि प्यार का क्या है, प्यार तो हो जाता है ना? Guys, give it up for Rashmi once more. बहुत cool. सही बात है, प्यार तो हो जाता है। मुझे बहुत बारी हुआ है। एंड आई थिंक प्यार ऐसा है जो आता है, कभी कभी पता नहीं चलता इन्फैचुएशन है या प्यार है या क्या है, यू नो, इट्स गॉट no reason, it doesn't tell you what it is, but it's there. And we mistake a lot of that for love. So इसी बात पे काफ़ी बारी हुआ है तो काफ़ी बारी लिखा है, एक कंडेंस करके लिखा था। It's called If Men Were Seasons. And I hope the ladies in the room understand what I feel. If men were seasons. If men were seasons, spring would be my lover. The one to cuddle up to and kiss from behind. The one whom my heart would bloom for when his smile would shed some light. With whom I'd go out to dinners and have pleasant conversations. We'd return home to close those garden doors, lay there with his mouth picking on me and mine on him to softly pollinate. If men were seasons, summer love would be my favorite, where I take a dip in the pool I call his eyes and stare at him with an intention so wild. I'd leave my mark all over this beach, scraping each sand granule like it was mine to eat. There are some rules in my summer. I'll see you when the sun sets until the rainy days come closer. But then I'd like to see you walk away and mirror that image with the waves fading those marks on the beach away. If men were seasons, the rains would be empty because no man could fill my heart the way I could when these drops fall on me. I'd be my own cup of tea and music would be my pakoras. Dancing in the rain, I'd be thankful for spring. For spring taught me to love another, but the rains taught me to love myself.
If men were seasons, autumn would be the fool. The fool who could let luscious leaves fall like hair from his hands. The fool who willingly stood empty while watching the flowers slip away. The fool who was so beautiful that its bare branches mimicked collarbones so familiar, a jawline so lickable, fiery eyes with passion for one, just himself. If men were seasons, winter would speak Urdu and tell me how he can't take his eyes off me, to which I would shiver, because I knew that he was far more deeply in love with me than I was, than I ever could be. He would hug me, trying to warm my mind up to him, kiss me, trying to sprint past my lies. Little did he know, my name is Himangini, and it means the one with the body of ice. Thank you. Thank you. So that was love, a lot of love. And I think love is something that, can gives us so much emotion that we can also write. As poets, we always look for this jolting sense of emotion to write. And love or anger out of love, that gets me there as well. Who here has experienced like a terrible breakup recently? Oh, we have one person in the house. Okay. Anybody else? No? Okay, all right, fine. Okay, so I feel you guys, and not that I'm suffering from a breakup. That's not true. But like I have suffered, and obviously like there is some rage that comes with it. I don't know if you guys are feeling angry, but I'm gonna do a quick switch up. Do a quick switch up from the love to the anger part. So I hope for both of you, you guys can feel my anger. This one I'm gonna have to refer to my notes. Give me a second. काफ़ी पुरानी है. अच्छा मैं हिंदी में भी कभी कभी लिखती हूँ, पर हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो I perform it less, but we'll try. Okay, so this one's called Fuck. It's sort of like, fuck. Like, what just happened in my life? Like, how could I have let this happen to myself? ठीक है, so fuck. This is the rage I dreaded to find, the one I knew existed within me, the one I took so long to hide. Fuck, I can't believe it's here. I feel like a dragon with all my power, soaring above the skies, waiting to breathe fire, waiting to hear you cry. I want to burn you. Cruelty wakes in me because you brought my wall down, brought my heart out, slathered honey on it. Honey with ants all over it. Ants that ate through my heart. Thank you, thank you, thank you for your pride is bullshit and my love is aimless. You're a bundle of lies like rubber bands tied up into a ball, elastic lies. Cry, 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 please cry. I want to see you weep. You aren't pleasure, and you definitely aren't my peace. You've bothered my soul, disturbed my inner peace. I'm sorry, baby, but this is it, the end of our lease. Decorate your heart like mine is now, ready to be buried 6 feet under, ready to erase its existence. Because guess what you did? You created a fire, burnt my heart. But here I am. I rise from the ashes to redeem myself, to redeem my art. Thank you. I saw some faces becoming like, oh my God, what is she saying? But yeah, love and anger go hand in hand. तो आज सुनते हैं कहीं आपकी भी stories होंगी. And with that, let's give it up for the next performer. We have Snehal. Hi everyone, I'm Snehal Kalda and this is my first open mic in Mumbai. Woo! Thank you. अगर अपने बारे में बोलूँ तो it's like कि किसी की नफ़रत को प्यार बनाया है मैंने. किसी की नफ़रत को प्यार बनाया है मैंने जब से अपनी कलम को हथियार बनाया है मैंने. So coming to my topic, it's like होता है ना कभी कभी कोई जा चुका होता है, आपको पता होता है वो जा चुका है, पर वो कहने के लिए रुका है, वो आपके साथ है मगर आपके पास नहीं है. तो उस ख्याल पर ये लिखा है कि यूँ तो थकते नहीं हैं आशिक मोहब्बत करते हुए, यूँ तो थकते नहीं हैं आशिक मोहब्बत करते हुए, पर तुम थक जाओ कभी तो बता देना. बता देना अगर मेरा प्यार तुम्हें रास ना आए, बता देना अगर मेरा प्यार तुम्हें रास ना आए, हम दूर होने लगे और
हमारे लम्हे साथ होकर भी ना टकराए। बता देना कि मैं बदल रही हूँ या फिर तुम बदल चुके हो। बता देना अगर मेरे चेहरे की जगह कोई और चेहरा हो और वो चेहरा मुझसे भी सुनहरा हो। बता देना अगर मेरी खुली जुल्फ़ों में तुम्हारी रात ना हो, हम दूर होने लगे और कुछ बात ना हो। बता देना कि गलत मैं भी हो सकती हूँ, तुम्हें जी ना सकी तो क्या हुआ, तुमसे जुदा होकर मर तो सकती हूँ। अपने दिल की हर बात मुझे बता देना, अपना हर राज खोल कर तुम मेरे सामने आज़ाद हो जाना। मेरी खुशी तुम्हें नाखुश देखने में नहीं है, मेरी खुशी तुम्हें नाखुश देखने में नहीं है। तुम अपनी खुशी की खातिर मुझे बता देना। बेवफाई का फूल तुम खिलाओ या मैं, बेवफाई का फूल तुम खिलाओ या मैं, चुभन तो दोनों को होगी ना। मेरे हिस्से की चुभन, मेरे हिस्से की चुभन मुझे सहने के लिए छोड़ जाना। मोहब्बत के ज़ख्म भी सबको नहीं नसीब होते। अब तुम अपने तमाम वादों में से एक सच कहने का वादा निभा जाना। तुम अपने तमाम वादों में से एक सच कहने का वादा निभा जाना। सुनो, बता देना। थैंक यू। Guys, huge round of applause for singing. क्या प्यारा लिखा है, इतना स्वीट। ऐसे मेरा वाला सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब जला दूँ मैं अभी and then suddenly you came and you gave this sweetness, but it's nice, अच्छा लगा। And I think मैं आऊँगी वापस, but let's have the next performer. Give it up for Shahnawaz. आदाब दोस्तों, शुक्रिया द हैबिटेट का। मतलब देखे कि चेहरे की हंसी तो पढ़ लेंगे, चेहरे की हंसी तो पढ़ लेंगे, ज़ख्म दिल के न देख पाएंगे, ज़ख्म दिल के न देख पाएंगे। लोग पूछेंगे ज़ख्म क्यों है हरे, लोग पूछेंगे ज़ख्म क्यों है हरे, कोई मरहम नहीं लगाएंगे, कोई मरहम नहीं लगाएंगे। शेर ये भी कि कोई मरता कहाँ है कसमों से, कोई मरता कहाँ है कसमों से, कौन मेरे लिए ये खाएंगे, कोई मरता कहाँ है कसमों से, कोई मरता कहाँ है कसमों से, कौन मेरे लिए ये खाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर देखे कि खिड़कियाँ खुल नहीं रही है अब, खिड़कियाँ खुल नहीं रही है अब, आज पायल बजे तो कह देना, आज पायल बजे तो कह देना। बह रहे हैं मेरे तो अश्क बहुत, बह रहे हैं मेरे तो अश्क बहुत, कोई आंचल रहे तो कह देना, कोई आंचल रहे तो कह देना। कत्ल पर मेरी सभी है मौन पड़े, कत्ल पर मेरी सभी है मौन पड़े, गर कलम फिर उठे तो कह देना, गर कलम फिर उठे तो कह देना। और गज़ल के चंद अशार देखे कि इश्क का मुझको आसरा दे दो, इश्क का मुझको आसरा दे दो, हाफिज़ा ख़त्म है दुआ दे दो। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ा ख़त्म है दुआ दे दो, हिज्र में जो मिला था ज़ख्म मुझे, हिज्र में जो मिला था ज़ख्म मुझे, कम से कम ज़ख्म की दवा दे दो, कम से कम, बहुत शुक्रिया, कम से कम ज़ख्म की दवा दे दो। और जुल्म अब बढ़ गया है रावण का, जुल्म अब बढ़ गया है रावण का, राम के जैसा देवता दे दो, राम के जैसा देवता दे दो। और शेर ये भी देख ले, गज़ल के चंद शेर देख ले कि हमारे अंदर तो मौजूद हर बात थी, हमारे अंदर तो मौजूद हर बात थी, मगर उसकी और मेरी अलग जात थी। बहुत शुक्रिया। मगर उसकी और मेरी अलग जात थी, विदाई उसकी थी आंसू मेरे आँखों में,
विदाई उसकी थी आंसू मेरे आंखों में, मेरी किस्मत की यही ख़ास सौगात थी, मेरे किस्मत की यही ख़ास सौगात थी। मैं उसका बोसा ले भी सकता था, हाँ मगर मैं उसका बोसा ले भी सकता था, हाँ मगर वहाँ इत्तफाक से चांदनी रात थी, वहाँ इत्तफाक से चांदनी रात थी। और शेर देख लेना मैम आप लोग कि, और जो परदेसी है उसके हवाले से भी है कि बेटी को तो घर बदलना पड़ता है, बेटी को तो घर बदलना पड़ता है, बेटे को शहर बदलना पड़ता है, बेटे को शहर बदलना पड़ता है। और हम भी गांव में रह सकते थे मगर, हम भी गांव में रह सकते थे मगर रोजी को तो दर बदलना पड़ता है, रोजी को तो दर बदलना पड़ता है। और शेर ये भी देख ले कि पूरी दुनिया तो है खिलाफ मगर, पूरी दुनिया तो है खिलाफ मगर एक लड़की मेरी दीवानी है, एक लड़की मेरी दीवानी है। और हिज्र से पहले मेरी रानी थी, हिज्र से पहले मेरी रानी थी, अब वो गैरों के घर की रानी है, अब वो गैरों के घर की रानी है। और उसी दिल्ली में दिल गया मेरा, उसी दिल्ली में दिल गया मेरा, उसी दिल्ली में राजधानी है, उसी दिल्ली में दिल गया मेरा, उसी दिल्ली में राजधानी है। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर देख ले कि मेरी दुनिया उजाड़ने वाले, मेरी दुनिया उजाड़ने वाले, जीते जी मुझको मारने वाले, जीते जी मुझको मारने वाले, तू मेरी एक झलक को तरसेगा, तू मेरी एक झलक को तरसेगा, मेरी तस्वीर फाड़ने वाले, मेरी तस्वीर फाड़ने वाले। और आखिरी बार आजा ख्वाबों में, आखिरी बार आजा ख्वाबों में, मुझको ख्वाबों में तारने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। एक बार और गाइस फॉर शाहनवाज। अब आपने माहौल ऐसा बना ही दिया है तो हम भी कुछ हिंदी में और उर्दू में शायरी करेंगे। तो नो एक्चुअली पहले मेरी कविता है हिंदी में। क्या होता है जैसे कभी कभी पागलपन भी प्यार में हो जाता है एंड उसके ऊपर कुछ लिखा था। ये नहीं पता कि वो पागलपन प्यार के पीछे था और व्हाट, बट समहाउ it's almost like for women I feel there's a rush of hormones and that rush can sometimes make us feel crazy, but we're not crazy, it's just our hormones. And this yeah, and so I thought acha isme if anybody feels offended by the reference I'm about to make, I apologize, but I was sort of feeling very connected to Meera and Meera in Hindu mythology, and Meera is a devotee of Lord Krishna, for those who don't know, and उनका डिवोशन कुछ इस तरह से था जो समझ नहीं आया मुझे। आई वाज लाइक कि किस तरह का डिवोशन है, इतना डिवोशन फॉर समथिंग दैट यू डोंट इवन नो इफ you'll ever get, you know, and that sort of made me feel like okay, maybe I can feel that sort of devotion towards work, towards love, towards something that I don't know what I'm seeking. तो इस पे कुछ लिखा था। इसका है आज फिर मीरा बावरी हुई, अनजान राहों में भटकती वो ढूंढती बेचैन तारे, अनजान राहों में भटकती वो ढूंढती बेचैन तारे, बेसब्री में गुम नाचती हुई, आज फिर मीरा बावरी हुई। शुक्रिया। मालूम ना था उसे ये कि टूटते तारे मोह माया है, मालूम ना था उसे ये कि टूटते तारे मोह माया है, डगमगाती वो चांद पे चीखती गई, आज फिर मीरा बावरी हुई। घूमती मचलती वो चांद को बोली, मेरी एक फरियाद पूरी कर दो, घूमती मचलती वो चांद को बोली, मेरी एक फरियाद पूरी कर दो, बेगर्ज चांद अमावस में ढलता गया और फिर मीरा बावरी हुई। शुक्रिया। ना जाने किसकी तलब थी उसे,
तारों में तारीखें दिखती हों जैसे। ना जाने किसकी तलब थी उसे, तारों में तारीखें दिखती हों जैसे। जानती थी वो एक ही राग, बेसब्री में गुम हुई। आज फिर मीरा बावरी हुई। लापता हो जाने से डर न था उसे, बेनकाब वो फिरती रही। लापता हो जाने से डर न था उसे, बेनकाब वो फिरती रही। शैतान रूहों में नादानी ढूंढती। आज फिर मीरा बावरी हुई। शुक्रिया। उस रात एक सफ़ेद परिंदा पिंजरे से छूटा था। मीरा के नाच की उसे हुई खबर। उड़कर आया एक शाख पर वो बैठा था। देख उसे बावरी मीरा फिर नादान हुई। शुक्रिया। थैंक यू। एंड तो ऐसा प्यार में ऐसा पागलपन भी होता है ऑब्वियसली, एंड आई थिंक मे बी यू रिलेटेड टू इट, मे बी यू फेल्ट इट। एंड देन कभी कभी होता है जैसे कि एक आज़ादी सी महसूस होती है। इफ फॉर दोज ऑफ यू हू फेल्ट लव और नॉट लव, मे बी दिस रिस्पेक्ट दैट रश्मि वाज टॉकिंग अबाउट, you can feel free being with somebody, and this sort of is about that. It's called rihai. भूल गई। एक मिनट। ख्वाबों और ख्वाहिशों के बीच के फासले को तुम्हारी नज़र कहते हैं। ख्वाबों और ख्वाहिशों के बीच के फासले को तुम्हारी नज़र कहते हैं। इस दिल की समझ और नादानी के बीच के फासले को तुम्हारी मुस्कान कहते हैं। शुक्रिया। ये दिल और दिमाग का खेल ना जाने कब वापस शुरू हो गया। हम तो अपनी बेलौज आशिकी में खुश थे, तुमने बेसबब सुकून से आशना करा दिया। शुक्रिया। अब इस दिल को तलब है जाना, कहता है सुकून में ही है घर बसाना। अब इस दिल को तलब है जाना, कहता है सुकून में ही है घर बसाना। तुम ये खेल छोड़ दो। क्या कहा था मेरी नज़रों ने जब भीड़ में टकराई थी तुमसे? छोड़ो मत बताओ। लगता है पहाड़ों के बीच तारों तले अंगीठी जलाए बैठी हूँ मैं। एक मेरा दिल जिसे ज़मीं पर घूमना पसंद है आवारा, एक तुम्हारा जो आसमां में चमक रहा रंगीन सितारा। शुक्रिया। तो ये थी मेरी थोड़ी शायरी, एंड हिंदी थोड़ी कमज़ोर है बट गुस्ताखी माफ़, एंड शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसी बात पे लेट्स कॉल द नेक्स्ट पोएट एंड गिव इट अप गाइस, राउंड बिग क्लैप्स प्लीज। Let's encourage people coming on board. Please clap, guys. Keep clapping for Ved Priya. Hello guys, my name is Ved Priya, but you can also call me Pizu. This is my first open mic in my entire life. Okay. इन बारिश के दिनों को कितना खूबसूरत माना जाता है ना। हर और हरियाली, हर तरफ फूल छाए हुए, हल्का सा वो हवा का झोंका और मिट्टी की वो मदहोश खुशबू। पर बारिश मुझे खूबसूरत लगने की वजह तो कुछ और ही है। एक वक्त था जब मुझे ये बारिश बिल्कुल पसंद नहीं, नफ़रत करती थी मैं ये बारिश से। मुझे हमेशा लगता था कि बारिश के उन आंसुओं में इतनी ताकत कैसे है कि वो मेरे आंसू भी नहीं बयां कर पाते। मुझे हमेशा यही बात सताती थी, मगर मेरे आंसू वो तो कभी उसे दिखे ही नहीं। बारिश की महज एक एक बूंद मुझे ये एहसास दिलाती थी कि तुम अब भी ज़िंदा हो और सह सकती हो ये सब। जैसे वक्त बीतता गया मुझे पता चला कि बारिश का तो कोई कसूर था ही नहीं, वो तो खुद मेरे कारण बेचारी बदनाम हो गई। कसूर तो मेरी इन आँखों का है जो बारिश से मोहब्बत नहीं निभा पाए और इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया। बारिश और मैं समझ सकते हैं एक दूसरे को, आखिर हम दोनों ने एक तरफा प्यार किया है। क्या बात है। जो पीजू बचपन में बारिश के मौसम पर जान छिड़कती थी, आज वही लड़की रोने का गुनहगार इसे ठहराती है। अफसोस हुआ यह जानकर कि बचपन में बनाई हुई उन कागज़ की कश्तियों को मैंने कभी किनारा दिया ही नहीं, वो खुद की ही आंसुओं में बह गई। मंजिल इतनी मुश्किल थी भी नहीं शायद।
तराशती हूँ मैं आज भी उन पलों को जो बचपन में कहीं खो गए। शायद दोबारा नहीं जी पाऊँगी, यही बात सताती है। मम्मी पक्का नहीं भीगूंगी, ये बोलकर भी जो पिज़्ज़ू घर लौटकर भीगी हुई आती थी, उसकी याद दिलाती है। खड़ी हुई हूँ आज मैं बारिश की राह देखते हुए, शायद इस उम्मीद में कि मेरी वो सालों की तड़प फिर पूरी करेगी। तड़प फिर से जीने की, तड़प बचपना वापस पाने की, तड़प एक मुस्कान की। नहीं सताती अब मुझे वो सारी बातें, क्योंकि बारिश से मैंने माफ़ी मांग ली है और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। ये मैंने देखा भी और महसूस किया भी कि मोहब्बत दोबारा हो सकती है। जब बारिश की वो पहली बूंद ने मेरी आंखों को छुआ, मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, तुम्हें फिर से प्यार हुआ है, याद रखना इस बार कोई गलती नहीं। थैंक यू। Give it up for Pizu. That's very cute. इतना ऐसा लगा था प्यार है आपको बारिश से, मतलब इतना प्यार है कि आप शर्मा गई बात करते करते उसके बारे में। एंड बहुत प्यारा लिखा है। एंड ओके, ऑलराइट गाइस, सो द नेक्स्ट परफॉर्मर इज सुगंधा। गाइस क्लैप। हाय गाइस, कैसे हैं आज सब? कैसे हो? तो हाँ, हो गया मस्त, नाइस. So I have some couplets for you today, and the first one is on पहली सी मोहब्बत. अब पहली सी मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि पहली मोहब्बत ही हो. It's a number of times we fall in love like the first love. क्या कीजिए ऐसी आदत का जो हर किसी से पहली सी मोहब्बत करा बैठती है. क्या कीजिए ऐसी आदत का जो हर किसी से पहली सी मोहब्बत करा बैठती है. थोड़ा ईमान ही रख लेते ऐसी चाहत का. माना थोड़ी ज़्यादा है मगर चाहत ही तो है. शाम तेरे इंतज़ार में मैंने बिताई नहीं कभी. शाम तेरे इंतज़ार में मैंने बिताई नहीं कभी. पहली सी मोहब्बत ने मुझे चीज़ें सिखाई गई कि सिर्फ अकेली शाम ही क्यों, रात भी तो है. बुरी ही सही, आदत ही तो है. अब जहाँ मोहब्बत हुई है, थोड़े तारीफ़ के लफ्ज़ उनके लिए. सूरज चांद से क्या करूँ तुम्हारी बराबरी. सूरज चांद से क्या करूँ तुम्हारी बराबरी. जिस चीज़ का क्या कहना वो चीज़ तुम हो. जिस इश्क से दिल दिल लगाने से डरे वो इश्क तुम हो. गुलजार साहब कहते हैं, नज़ारे नज़ारे मेरी कहीं थक ना जाए. सॉरी, नज़रें मेरी कहीं थक ना जाए. बेवफा तेरा इंतज़ार करते करते. यहाँ जान यूं ही निकल ना जाए तुमसे इश्क का इजहार करते करते. एक क्लास कपलेट है. कूच की घड़ी आ ही गई. कूच मीन्स डिपार्चर. कूच की घड़ी आ ही गई, ये खूबसूरत महफिल रुखसत हुई. जो सो रहे थे उन्हें क्या होश, आज फैज़ से फरिश्ता आया था. तारे भी आज छिप गए, चांद की अदा से शर्मा गए. शायद आज तारों को चांद से एक बार फिर इश्क हो गया होगा. थैंक यू. बहुत प्यारा लिखा है. वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुगंधा. अच्छा, आजकल वैसे कितना आसान हो गया ना प्यार मिलना, है ना. बम्बल है, हिंज है, कितनी चीज़ें हैं. मिले तो सही, ढूंढो तो सही. तुम तो मिले. कहाँ ढूंढ रहे हो? Guys, who's single right now? You're single. Oh, she's not. Never mind. Okay. So, but हाँ, मतलब आसान हो गया as compared to before, or rather you can filter things out. You can choose. Options बढ़ गए. That's better. तो इसी पे कुछ लिखा था थोड़े टाइम पहले, frustration के मारे. And I was like, यार इतनी options हैं तो भी नहीं मिल रहा है. That's exactly what my thought was. And it's called Love in 2021. पिछले साल लिखी थी, फिर उसके बाद मिल गया, तो it's fine. यहीं बैठा है. So, Love in 2021. In 1947, when the shots were being fired, when the houses were being looted, she turned to get one last look at his face as she ran for the train before it left the station. They never spoke, never with words anyway, but she knew it was love.
That feeling didn't come so often, you know. It wasn't every second day that someone's gaze made her feel excited. It was perhaps that he dared to look back at her when she did. Their eyes locked, and yes, like a cliche, there was an explosion. This explosion happens every day or every week in 2021. However, it's no longer an explosion. They're small explosives, much tinier, just more frequent. Swipe, 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 match. As she's about to swipe left, she locks eyes with him in the photo and thinks, he's beautiful. Change of heart, swipe some more, he's beautiful too. At some point, she realizes 1947 and 2021 aren't so different after all. Due to social reservations, she couldn't confess her love with words then. Due to social reservations, she can't confess her love with words now. Are we really free from society's expectations then? To find ourselves in a horrid Horcrux where our souls are trapped and not broken into 7 but a million pieces. A piece for every time she thought it was love. A piece for every time a love song from the 70s didn't make sense. A piece for when she thought there was hope. A piece for every time she thought she could commit better. You see, we skipped the generation that served our minds before our bodies. We jumped straight from silence into a big techno party. From shyness to nakedness, from smiles to bites, from buying flowers to buying condoms, from holding hands to being grabbed. Can you see how this progression is hacked? Where's the part where I learned to be cautious with my mind? Where's the part where it hurts and I'm able to express? Where's the part we learn that we are human and that ego is our biggest distress? This can't be it. So I'm going back to sleep, hoping to wake back up in 1947, a day before partition between India and Pakistan and me and my lover, to run back to him and kiss him, and to let him know that he's hopefully going to be my forever. Thank you. So technology obviously has helped us get here. And we have so much to thank it for, we have so much to blame it for. And the next piece is thoda serious, off topic from love. But I thought ki kahin na kahin, everything that we're doing right now, we're taking videos, we're doing everything, it's gonna go up on Instagram. It's gonna go to our friends. And so much of information has led to so much of, so many opinions that come up. Opinions that are not filtered. Opinions that are not sometimes needed to be heard also. You don't have to express them. But we do because there's free speech, right? Who's seen The Social Dilemma here? Okay, there's like 2 people in the room. So you might be able to relate. This came out of that. I saw The Social Dilemma. It's a great, great docu, by the way, if you guys want to watch it. तो इसी पे कुछ है. It's called Check Your Tone. Okay, here's the thing. I want to have a conversation. I want to have a conversation about social media, about how there can be 2 sides to the truth, about how your truth is your entitlement, whether it funds ISIS or Congress youth. Tell me, how can the earth be flat and round? How can a dress be black and blue? Can you see that these are the different perceptions of the truth? How can a girl want to change her nose simply because some man said it blows? And how can we learn to accept that hate so easily before we can even begin to debate this perception of reality and bring back some rage, faith into human touch and some real-time rage? So you're going to tell me that your opinion needs to be heard. Of course. Say it now. Say it here. Say it to my face. There's a reason why you or they choose to hide behind the curtains of RGB lines and use your fingers to spell out crime, project their fears with hate speech or rhyme, and someone else finds this amusing. So they click on that like and it starts this avalanche of opinions, unsolicited, unprecedented, unwarranted, bending the truth just a little bit in your direction, even if what you said could rile up millions. What's your social responsibility? Never mind, you just wanted to voice your opinion. But you see, there's a problem with that. Every time you click, 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 your opinion makes someone else tick, 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 and that time bomb begins to sink in deep into their minds.
pushes them to sometimes pick up a gun and kill children as young as age 9. Or even tell someone that they simply deserve to die. Now tell me, how often can you say that to my face? Go on. Say it. Tell me I deserve to die. Didn't think so. That's what I thought. All right. And for all of you who are about to say that I'm only on social media for fun, not politics, need I remind you that Kanye was running for president. Mind your own business is the motto of the young. How many of you follow Kim Kardashian? Idealizing the unrealistic beauty standards and unknowingly clenching your waist to empower yourself in her direction. Where's your voice now? The problem with social media is that it isn't social at all. It's the center of new democracy, the one that Plato couldn't even begin to warn us about. The crack in this cosmic egg is giving birth to demons ahead, where our voices are silent yet leave deafening vibrations, where we'd first feed the dogs on Instagram than our furry real-life creations. Tell me, do you bathe before or after you check your phone? Because this game is dirty and you have to check your bloody tone. Thank you. So a little serious हो गया ना थोड़ा भी इस time पे. But you guys feel me? What I'm saying? I'm glad. कुछ चुप थे बाद में बात करते हैं. But okay, so and the next performer is going to definitely lighten up your mood a little bit more. So let's give it up for Arsh. I don't know about lifting my your mood because I had something completely different planned to actually mess you guys up even more. So I'm going to just tell you guys a little bit about myself. My name is Arsh Malhotra. I've been performing for the last year and a half now. Habitat has seen me perform a couple of times, but I'm going to be trying something completely different here. I normally do poetry. I write in English, and like Himangani said, she also writes thodu. I also write thodu. I'm an English poet, but the style of Hindi has now gotten so prevalent in today's day and age that there's something about that language, man. Like, there's something that just hits to the heart, and especially in India. So, the reason I'm saying especially in India is you guys will know. So, I lived in Canada for about 6 years, and I moved back 2 weeks ago. I moved back 2 weeks ago to be on stage full time. I moved back 2 weeks ago to be with fam. And I've learned a lot. I've written a lot about my experiences abroad and everything, and living alone. But today, I'm going to be trying something completely different. I'm going to be trying poetry, but not exactly poetry. So, will you guys support? Woo! All right. So, like I said, I lived alone for 6 years. I was away from home. And people generally ask me, what do you do when you feel all alone? I tell them that when I want to talk to someone, I pick up the phone. I'll dial a number with someone who I've lost touch. I'll try to create new memories. It doesn't take too much. I've learned to live by myself, supported and surrounded by people who love me every day, which is why it doesn't matter when things might never go my way. And we're at a time in the year where we're surrounded by change. Like, how many people are in college here? Give me a cheer. Right? When did you guys graduate high school? 2 years ago. So around this time, you guys must have started college, right? Yeah. So similarly, we're at a time in the year where we're surrounded by change. Seasons are changing. People are starting new jobs. Students are graduating high school and college, shutting an important chapter in their lives to embark on a new journey. And a lot of things are ending while a lot of things are being embraced in new light. No matter what you've done this year, thinking about it can be daunting. And it's okay to feel that way. It's okay to just take it a day at a time. You don't have to set plans for your future. It's okay to just take it a day at a time because we're so caught up by trying to impress the people that live around us, we forget to impress the person that's living within. At the end of the day, we should try and impress the person we were yesterday. How many people have been asked this question? What are your plans for the future? How many people, right? It's a question that everyone's been asked. Some know exactly what they want, and some don't. And it's okay to not know. It's okay, like I said, to just take it a day at a time.
as long as you keep going each day, be proud of yourself. Be proud of growing from who you were yesterday. Be excited about who you will be tomorrow. But guys, just most importantly, be happy about who you are today. That's the most important thing. Thank you. You know what I miss the most though? I mean, where you guys might be in college, right? You guys are in college. You guys have those friend circles going to cafes and everything. School mein bhi tha na? है ना? I miss the times when we used to go to cafes and fight about who's going to pay. We used to find a million reasons. We used to find a million reasons to chill with our friends and do things for them by going out of our way. Go out and tell your friends how much you love them because they're actually your chosen family. I'm sitting here today talking to you guys about it because I have chosen my family back then. They're Harsh, Vivian, Mahangini. And they're the ones that'll be supporting you the most at the end of the day. They're your pride. They're going to be your closest. Before I go, I'm just going to leave you guys with one small poetry. It's in Hindi. It's about बचपन. बचपन में खेलते थे हम सब यार एक साथ. बैट बॉल हो या साखली ना छोड़ा हमने एक दूसरे का हाथ. वादे किए थे कि बस नीचे खेलेंगे हम. ना कोई फ़ोन का टेंशन ना लैपटॉप घूमने का कम. कब लाइफ आके मुंह में मारेगी ये हमें कभी सोचा नहीं. बस सब अपने अपने रास्ते एक दिन चल दिए. ये कभी वक्त ने हमें बताया नहीं. तो तुम जहाँ भी हो यारो मैं आशा करता हूँ कि सुखी हो क्योंकि तुम ही तो थे जिसने मुझे खुशियाँ दी और कभी ना चाहा कि मैं अपने आंखों में पानी भर लूँ. Thank you guys. That's been my time. My name is Harsh Malhotra. I hope you guys have a great rest of your day. Guys, give it up for Arsh. तालियां जोर से नहीं बज रही हैं आज. मतलब क्या है? मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो बताओ. खुल के बताओ. हम यहाँ पे इतना सब कुछ जाहिर कर रहे हैं. So, okay. अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ यहाँ से. To take you guys where at this point in your minds. But कभी-कभी जब ऐसा होता है तो settle at love. Always a good topic to go back to. But तो ऐसा है कि I had started shifting certain ways of writing poems. Abhi you heard there was a very specific way of writing. This 1 paragraph, 2 paragraph, 3 paragraph करते-करते. फिर बीच में I met these new poets like Rupi Kaur. Like, you know, we got introduced to them and some people really like that sort of poetry. But I could never write it. I could never feel like I can end my poem in 3 sentences. भाई इतना कुछ बोलना है कैसे 3 sentences में, you know. But I tried. I tried to at least get that sort of style of poetry going. And I wrote a few things. So let's see. आपको कैसा लगता है? ये छोटी नहीं है, बड़ी ही है, but it's the style of poem that is different. It's called Locked, Loaded Lovers. We're locked up within ourselves, unamused by our circumstances. Even though our circumstance is a big yellow bus heading straight towards us as we hold hands and sway from side to side. Loaded with the baggage our past lovers left us and scars that our parents didn't intend to leave. Unpacking the suitcase right in front of each other, we get tired and fall onto the bed. I roll us a blunt and lay on your stomach. You inhale and my head rises. I match the rhythms of our breaths that rigorously pour music into the air. A whisper climbs up your shoulder and yells, "She's yours," even though you innately know she can't be anybody's. Clarity dissipates and becomes a lyric that only you and I hold a memory of. You sing along and walk over to your suitcase, packing my bra inside it, asking me if we're each other's baggage. To which I say, for now, we're just lovers, locked, loaded lovers, comfortable enough to open fire in each other's arms. Thank you. नहीं अच्छा लगा ना तुम लोगों को? अच्छा लगा ठीक है ओके तो फिर बताया करो. Even in the middle, if you feel like there's something, I know English poetry is not like शायरी की दाद दे सकते हैं हम बीच में, पर दे सकते हो बिल्कुल. Why not? देने को दे सकते हो. And
I think also one of the things with love that comes is that one of the sort of loves is that कभी लगता है कि बहुत अरसे हो गए हैं और lifetimes have passed and I know this person too well. Like as if I've known this person for lifetimes. You are nodding and you're like, yes, I know exactly who you're talking about. I've experienced this. But कभी-कभी इस टाइम में जब मिलते हैं हम उनको, इस बारी जब मिलते हैं उनको, तो एक तरफा प्यार हो सकता है. You never know what you end up with. So it's called The Girl Who Cried Wolf. We found each other in a maze of maths, of vodka, of whiskey, of Daft Punk songs, of slurry words, of an unspoken love. Blaring through the windows of my heart came a voice so loud. Yours. It was there, you know. It used to knock on my heart and I didn't recognize it. You and I haven't been written about, so I don't know who to compare us to. Incidentally, I never write about us too. How can I tell our story when you're a fighter and I'm a quitter? Deep within the shadows of the night, a coil in my stomach tightens as you twist it further with your words, with your eyes, with your smile. No, we're not a love story, nor are we lovers of the present. We've existed like atoms within each other for eons. We met in a cloud when you and I were raindrops and we parted as we fell to the ground. We met again on a hill when you were a bee and I was a flower, and we spoke about the queen in your hive. We met again in the sea when you and I were little lobsters and one of us got fished out for life. And now we meet again, but this time we don't know who we are. You see, in the other lives, we gave each other purpose. In this one, you're a lone wolf and I'm a lone vixen. Thank you. Thank you, guys. Keep the claps rolling for our next performer. Guys, give it up for Harsh. Hi. It's okay. It's fine. We'll do this again. Hi. Hi. Okay. Now you guys seem awake. Okay. Before beginning, can we please have a round of applause for Himangani? This is the least. I'm saying give it up. Like how much of you have energy? Okay. Thank you. Thank you. This is draft 4.5. It's called Maze of Mirrors. Here it goes. I got lost in a maze of mirrors, searching for the future, bumping into the past, and forgetting the present. This maze is both mystical and mysterious, nudging you forward as the gravity of the past pulls you back. The past is a slippery slope with no safety net. Once you slip, you could swim, float, or drown to rock bottom. It's quite useful to know how to swim. Well, I didn't. So I drowned and I hit rock bottom. You know, we hear in poems that a savior in the form of hope will appear when you hit rock bottom. But what do you do when you're both hope and destruction? An altered mix to make a unique blend that takes the form of you. There are two ways out of rock bottom. Either you face adversities and get out of this, or you stay put and in your yesterday and miss out on today and then tomorrow. I gave up. I gave up and I settled in yesterday. Pitched a tent and tried to hold myself back knowing I'll never be able to make it on the other side. I learned one thing that night. It is easy to push yourself down than it is to push yourself up. Switched on the radio. As the sun of hope was setting, a song played in the background which happened to be my favorite, and here it goes. I should have known better. Nothing can be changed. The past is still the past, a bridge to nowhere. Even though the light set, leaving about darkness, a light bulb stuck right above, pouring hope and delight. The past is still the past.
the past is only the past, not the present or the future. I began this journey not knowing whether I'll make it or not. I'm on my way from yesterday, hopping, skipping, trekking, hoping to make it little today. When I reach there today, I hope I really see you there. Thank you. Okay, thank you. Okay, I just have a small-ish announcement. So, my name is Harsh. I work at the Habitat. We have this event called Creative Block Party, which is happening. Some of you may have seen it in our posts. So it's an invite-only show where we get musicians, we get poets, we get storytellers. We come and try to do a culmination of all of it through stories, essentially. So it's going to happen on Wednesdays. If you're interested, do let me know after the event. Apart from that, I'm doing my solo storytelling show, like a 1-hour show, on Wednesday, like 2 days from now. Thank you. On Wednesday, it's at Above the Habitat, 3 floors from here. If you're interested, it's a free event. If you're interested, there is an invite for it. Do meet me after the event. I'll be somewhere around here if you really want to attend, and I will send you the link. You can RSVP on the link and show up, and I will see you there. Thank you so much. Can we please have it for Mangani? Thank you. Coming down. That's how much time it took to get the mic back down. But guys, give it up for Harsh again. Okay, let's have the next performer on board. Guys, keep it going, keep it going. For Madhura. A lot has been spoken about how love is easy these days. So there you go. Life is funny when you're not a girlfriend or a wife. You cook for yourself and your friends alike. The friends who tell you that he is right around the corner, he who is the one, the ultimate charmer. In the hope to find love, I go on Bumble, Hinge, and Tinder. Now you will know the rules and the known hinder. There's no introduction to my poem, so let me just go in about how my fingers move from left to right at the toilet seat and through the midnight. First is the type you call cliched, self-proclaimed poet and a musician for now. So many languages and so many things to try out. They are the kind that judge your taste. I meant music and food. What was your take? Not divulging too much, they take you to places such, pretend to fill your soul with culture and talks. Then are the army brats, gymming till the end of the day, posting pictures of Greece vacations and really hot babes. Bios that stay taller than you in heels, conversations that are shorter than lives of bees. To add to the extra sugar come the super romantics, using cheesy line and forsaken tactics. I was wondering if you had an extra heart. Mine was stolen, they say. My mother wouldn't like you as a bahu at the end of the day. The kind you call stoner with no strings attached adds 420 to his bio and pipes to his picture. Do not give him your number. I mean, do not give him your number. He'll call you in the times of need, not any emotional ones, just cocaine and marijuana needs. Then come the IIT and the IM guys working in the MNCs and wearing amazing ties. Geek you out over Marvel and DC. They talk smooth and creamy stuff. Eat your pizza and leave you only the crust. Calling you for hookups at really odd hours. Can I tell you, it's really boring when you compare yourself to Gates and Biswa in the making. Well, I think my time here has almost come to an end because the rules here are not meant to be bent. If you're free, I can tell you some more over a cup of coffee or beer. Well, today is not the day, but only if you are around this area or maybe Juhu or some area near. Well, that was a joke because I won't meet you because I turned a little old and I'm not ready for a friend new. Thank you. Guys, give it up for Madhura.
I can't tell if you want somebody to approach you or not right now. It's like, you guys can try. I mean, like, maybe not, but who knows. Love obviously is difficult to find, and we are there yet. And it's also one of those things where you sort of come around and you're like, when it comes to you, do I want it? Like, you know, that question comes up. You're like, abhi chahiye, nahi chahiye, abhi single life to mast chal rahi hai, kyun karna hai ye sab? Like, you know, you go back into that spiral in your mind and like, it's like, okay, what the fuck? And then obviously you see your friends who are in relationships and you're like, shit, I want that as well. So it's like this constant dilemma back and forth between wanting love and not wanting it. So I think that's where you're at. But don't go to Juhu, guys. And don't try to find her. So I think I'm going to come back in a second and we'll call the next performer on board, Tanisa. Hi, my name is Tanzi Sheikh, and thank you very much for giving me a new name. Every day I meet someone, every day I get a new name. So my name is Tanzila Sheikh, but people obviously can't take it properly, so I have kept it very small. So it's Tanzi, and you can find me on Instagram as Tanzi Tales. मैं 1 मिनट हो गया मेरे को आके इधर. ये चालू कब हुआ? Okay. So yeah, I will just recite a little piece and then a story and then I'll say bye-bye. Okay. इस piece का नाम है सुना है कि मुझसे मेरा पता पूछते हो, मुझसे मेरा पता पूछते हो, ख्यालों की दुनिया का नाम सुना है, जो देखा था कल सपना किसी को माना था जो अपना, वो कहाँ रहता है आजकल, क्या उसका पता सुना है? इश्क, आशिकी, मोहब्बत, ये सारे लफ्ज़ बड़े प्यारे लगते हैं. जिनकी दुनिया इन लफ्ज़ों से ख़राब हुई है, बर्बाद हुई है, वो कहाँ रहते हैं आजकल, सुना है? महफ़िल में लोग खड़े रहते हैं मेरी सिगरेट जलाने के लिए. ये जिसने मेरे दिल में आग लगाई है, मेरे धड़कनों को सुलगाई है, वो कहाँ रहता है आजकल, सुना है? वो सड़कों पर मारे फिर रहे हैं तुमसे तुम्हारे मज़हब तराश रहे हैं. उन्हें कभी खुदा के घरों में जाते हुए और दुआ मांगते हुए सुना है? मेरी अम्मी कहती है कि बाहर जाया करो तो पर्दा किया करो. मेरी अम्मी कहती है कि बाहर जाया करो तो पर्दा किया करो. उनसे पूछती हूँ कि माशरे की आँखों में औरतों के लिए पर्दा है क्या, सुना है? माशरे मतलब सोसाइटी. कि मेरी आदतें कुछ ख़राब सी है, गमगीन हूँ, खुशबाश हूँ, पागल हूँ या होशो हवास में हूँ, किसी तमाशबीन का दिमाग ठिकाने हो, ये कभी सुना है? तेरे दर से कई दफ़ा गुज़रे हैं, हर बार कलेजा फट सा गया है, दर्द टूट सा गया है. तूने मेरे दिल की ये आहट को कभी सुना है? मेरी आँखों में देखोगे तो सहमी सी लड़की दिखूंगी, पर मेरी ज़ुबान से कभी इस दर्द को बयां होते हुए सुना है? थैंक यू वेरी मच. दैट वाज सुना है. अभी एक ये छोटी सी कहानी है. इसका मैं एंड में थोड़ा सा बताऊंगी प्रीमाइस. इसका नाम है परेशान आदमी. तो मेरी मम्मी को है ना थोड़ी सी बीपी की शिकायत रहती है, और अभी रिसेंटली ना उनका मैंने ना टेस्ट करवाया था शुगर का. तो अभी शुगर की रिपोर्ट लेने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा. हॉस्पिटल मैं अपनी स्कूटी से गई थी. आई ट्रैवल मोस्टली बाय स्कूटी इन मुंबई. ठीक है, तो मैं स्कूटी से हॉस्पिटल गई थी और बहुत बारिश हो रही थी. वो टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी और काफ़ी लंबी लाइन थी, बिकॉज बारिश में पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. हमेशा कहीं पे भी जाओगे ना क्राउड बढ़ जाता है, लाइक into 2 हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है. तो मुझे समझ में नहीं आता. ट्रैफिक, बारिश है, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, पर ट्रैफिक उससे डबल दिखेगा आपको अगर आप रोड पे जाओगे तो.
तो मैं ट्रैफिक में अटक अटक के कैसे भी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में देखा तो रिपोर्ट के लिए लाइन लंबी थी और मैं खड़ी थी बस लाइन में अपने रिपोर्ट के लिए, मम्मी की रिपोर्ट के लिए। तो तभी एक परेशान सा आदमी आता है, एकदम बाल ऐसे बिखरे बिखरे से, शर्ट की हालत अजीब सी, और एकदम से जैसे कि बहुत परेशानी में है, और यू कांट रियली हेल्प देम, यू जस्ट कैन लिसन देम। तो वो आता है और मुझसे पूछता है कि बेटा टाइम कितना हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है। तो मैंने बोला अंकल कुछ घड़ी के 8:30 हो रहे हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है। अब वो चले गया और मैं रिपोर्ट ली और मैंने देखा कि बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा अब इतनी बारिश हो रही है और कूपर हॉस्पिटल का जो है ना कैफेटेरिया है ना, वो बहुत अच्छा है बाय द वे, जस्ट गिविंग यू अ लिटिल हेड्स अप। वहाँ का कैफेटेरिया बहुत अच्छा है, उधर की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि है ना मैं जाके कॉफ़ी पी लेती हूँ, तब तक है ना बारिश थम जाएगी थोड़ी और मैं स्कूटी से चुपचाप चले जाऊँगी। तो मैं कॉफ़ी पी और तब तक थोड़ी सी बारिश थोड़ी थोड़ी सी थम गई थी। फिर मैं निकली वहाँ से और मुझे वो अंकल वापस दिखे। वो अंकल ने फिर मुझसे पूछा कि बेटा तुम मुझे पास के स्टेशन पे छोड़ दोगी क्या? पास का स्टेशन शायद विलेपार्ले स्टेशन था। तो पास के स्टेशन पे छोड़ दोगी क्या? तो मैंने पहले सोचा कि मैं लिफ्ट दूँ नहीं दूँ, बिकॉज ऐसे टाइम पे आपको अपने घर पे पहुंचने की जल्दी, ऑलरेडी 9 बज गए हैं। फिर पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने बोला चलो ठीक है आपको लिफ्ट देते हैं। वैसे भी 7 या 8 मिनट्स का ही रास्ता है विलेपार्ले स्टेशन फ्रॉम कूपर हॉस्पिटल। तो मैं कूपर हॉस्पिटल में फिर उनको विलेपार्ले स्टेशन पे उनको ड्रॉप किया और मैं वहाँ से अपने घर निकल रही थी। तो घर जाते जाते बहुत अंधेरी में, अगर इफ़ यू गाइस स्टे इन अंधेरी ना, अंधेरी का रास्ता जो है ना वो इतना महान रास्ता है ना कि आप सीधे गाड़ी चला ही नहीं सकते हो। आपको ऐसे 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 पूरा नागिन डांस करके चलाना पड़ता है, ठीक है। लिटरली आई एम टेलिंग यू बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपको बहुत नागिन डांस करके चलाना रहता है। अब मेरे जो एक नाना है, नाना ने मुझे है ना, मेरे नाना ने मुझे स्कूटी चलाने सिखाया था बचपन में। तो मेरे नाना ने बोला था कि बेटा जब भी तुम चलाओगी ना ट्रैफिक में, लेफ़्ट साइड से चलाना, क्योंकि लेफ़्ट साइड से तुम जल्दी जल्दी निकल जाओगे। अब मैं लेफ़्ट साइड से चला रही हूँ, ठीक है, चला रही हूँ, और मेरे घर के पीछे की 2 लेन के पहले है ना ट्रैफिक, हाईवे से लगता है वो रास्ता, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट साइड से चला रही हूँ। अब ट्रैफिक जो है वो भर के है, उतनी ही क्राउडेड जगह है, उतने ही सारे क्योंकि वो हाईवे से लगता है, तो बहुत सारे ट्रक्स थे उधर। तो मैं चला रही हूँ, अचानक से क्या होता है पता है, मेरी जो स्कूटी है ना वो थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस होती है तो मैं तो संभल जाती हूँ, मैं आगे चलती हूँ, पर है ना मेरे बाजू में जो ट्रक थी ना वो गिरने वाली रहती है। अब वो गिरते गिरते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं अपनी स्कूटी छोड़ती हूँ और मैं साइड होके भाग जाती हूँ। अब वो जो ट्रक है वो स्कूटी के ऊपर गिर जाती है और स्कूटी मेरी चकनाचूर हो जाती है। और मैं और वो ट्रक जैसे गिरी रहती है ना, मैं उस तरफ देखती हूँ, वो अंकल मुझे दिखते हैं, जिन अंकल को मैंने विलेपार्ले स्टेशन छोड़ा था। अब मैं एकदम डर गई। मैंने बोला ये अंकल को तो मैंने छोड़ा था और ऊपर से मेरी स्कूटी अभी ख़राब हो गई, मैं क्या करूँ। मैं सोचा मैंने पापा को फ़ोन करती हूँ। मैं अपना फ़ोन निकाला। अब मेरा ट्विटर एकदम है ना, बहुत एक्टिव रहती हूँ मैं ट्विटर पे। तो मेरे ट्विटर पे एक नोटिफिकेशन आया था कि फादर डाइड एंड सन इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन इन मुंबई कूपर हॉस्पिटल ड्यू टू पॉट होल्स इन मुंबई, एंड दैट वाज द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। प्रेमाइज क्योंकि पॉट होल्स बहुत है मुंबई में, एंड आई रियली होप कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ करे, बिकॉज आई हैव सीन एंड मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डाइड एंड गॉट इंजर्ड ड्यू टू पॉट होल्स। थैंक यू वेरी मच। Guys, give it up for Tanzi. So, I thought about where I want to take you next, and I have come back to telling you about that. I write about 2 other things, and I mentioned that in the beginning. There's horror, and there was space. You guys pick. Space? Okay, nobody likes horror here? Really? You like horror? Anybody else who are horror fans here? Text me, I'll send you the horror stuff. It's pretty fun.
See, because horror poetry you don't hear very often, and it's something like which I make people close their eyes and then I say it, and then they're imagining all that horror around them. But it's fun, it's thrilling. So, um, just give me 1 second. So, I wrote something about the planets and how we kind of live in a world where there's so much space, but we don't know how to give it to each other. And like that's literally like the premise of this. So, space. अच्छा इसमें थोड़े terms हैं which some of you might not understand, but Juno is a satellite that takes photos of Jupiter. Okay, Jupiter is a gaseous planet which obviously like we don't know anything about because we're not able to enter it. There are storms brewing in Jupiter which we believe if we get to know what is in the center of the universe of Jupiter, we'll know exactly how we sort of began, how the world began, and the universe came about. So it's very, very deep, and the storms have been brewing there for like 150 years, and they're just there. And one of the storms has ended up looking like a rose. So when we look at it, it looks like a rose, and they call it the Great Red Spot. And the last thing you need to know is Europa is a moon of Jupiter, which looks like it's got blood splattered all over it. Space. What does it mean when you tell me that 8 planets and all their moons can survive with adequate space from one another? But you don't understand when I say I need it from you. Why is it that the icy cold exterior of the incompetent Pluto makes me feel more at home than you? The visions that Jupiter leaves for Juno are like the letters I leave for you, warning you of my destructiveness, yet reminding you of my incomparable beauty. The wide red lines on Europa remind me of the blood that splatters in my body, mimicking my veins, attempting to draw my insides as though I am Jupiter and you are my moon. Say if I were Jupiter, would you dare to enter me? Brewing storms just like the ones in my mind. It feels like Jupiter is my sister sent from the divine. The great red spot is just like the one I bleed. It's been brewing since my existence and it's down to its one last deed. My mind suffers just like her, yet paints a stellar image just like her. I bleed my insides and you say that's what I chose. She tells you she's wilding and you call it a rose. They say she knows all the secrets, the ones that'll tell us the truth of our existence, the truth of it all. Whether Darwin was true or did Brahma create it all? 8 sisters and little ones too, they thrive with space, respect and abundant space for fools. Their purpose is one, to circle around the sun, the primary source of life, even though only one of them has suns. Imagine how it could be if we understood that too. If we could leave room to be, to watch Venus shock us with heat, to let the Martian within us grow, and to rage like Jupiter when the light within us slows. To never deceive like Saturn with its rings of gases, and to maybe give hope for life whenever water on Titan passes. If we too could hover around to protect the energy that keeps us strong and erect, the light of our lives, the sun itself, the poetry of our lives, love itself. Thank you. So that was on space. And we're coming to a close very soon, guys. So keep the energy going. And let's have our next performer. Let's have Vanshika, guys. Give us a round of applause. Hi, I'm Vanisha, and this is my first open mic. It was a sundown. Everyone pat his shoulder as they left, but he sat right there with his shoulders slumped. He sat there on the chair with his black suit on, with her wedding ring around his pinky finger that he had bought. His skin pale as the dress on their wedding day, his face all wrinkled up, his spirit all crumpled up, scarlet around his blue iris. He sat there in defeat,
with a numbing yet excruciating pain. He sat there reminiscing about their love, about the nights that they snuck into each other's room, about the time that they had coffee with bills in the dining room, about when they threw stones in the well, about the slow dancing in the rain, about the house that became their home from nothing, about their secret hand holding, about how mundane yet extraordinary their love was, about how she held him when he broke down. He sat there feeling somber and broken. This time he couldn't run to his lover to be held, because his lover was 6 feet under by the well. Thank you. I did it again. I'm sorry. Give it up for Vanisha. You guys can coin me some nicknames for the wrong namesayer. But I apologize. It's just the dim light sometimes, and you can't see the name right. I'm sorry. All right, guys, let's have the last performer of the evening. And guys, give us a round of applause for yourselves, for being here, for Habitat, for everybody who's come here today, and Couple. Guys, keep it going. हेलो एवरीवन, बराबर आवाज़ आ रही है? तो आज का आखिरी परफॉर्मेंस है और मेरा पहला, तो फ़ोन आ रहा है, फ़ोन अभी तक के किसी ने नहीं किया, अब कर रहा है। अच्छा, सबका अटेंशन चाहिए। हाँ, मैं हूँ अटेंशन का भूखा, ठीक है। एक राइड पर लेकर जाने चाहता हूँ आपको सबको। दिवाली आ रही है, सबको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? राम जी जब जीत कर आए थे, है ना। कुछ लोग हिंदू में मानते होंगे, कुछ मुसलमान में, कुछ क्रिश्चियन, कोई और धर्म। मैं मानता हूँ इंसानियत में। सब मानते हैं इंसानियत में, है ना। किसी ने रामायण को भगवान की तरह लिया कि हमने भगवान देखा उसमें, किसी ने कहानी की तरह, हम लेते हैं एक सीख की तरह, ठीक है। मैं कैसे देखता हूँ रामायण को? त्रेता युग में हुई थी रामायण, उसको हम आज से कंपेयर करेंगे। हम कैसे सीखे उससे, हम क्या जाने, ठीक है। मैं बोलूँगा एक बार, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है, आपको बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हमें सिखाया है बचपन से जय श्री राम बोलना। हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, घर पे बोलते जय श्री राम। जय श्री राम सबके मुंह पे उम्र 5 या 55, राम नाम जपना सपना बीता अपना बचपन, अपनों की रक्षा में 14 बरस जागे लक्ष्मण, और मिला सी तपस्या के हर महिला इतनी सक्षम। हनुमान छाती चीर प्रभु को दिखाया दर्पण, प्रभु को खुद में खोजो वो स्वयं देंगे दर्शन। कौशल्या सुमित्रा माँ किसी में कई कई के लक्षण, आज कपड़े हैं अनेक लेकिन सोच सबकी नग्न। मंथरान कान भरती तो न होती ये रामायण, पापी बहन के पाप में मर मिटे खरदूषण। दशानन है लालची तो जन्म लेगा विभीषण, माँ बाप जब बिछड़े ना तो लौकुश सा बीते बचपन। जय श्री राम सबके मुंह पे उम्र 5 या 55, राम नाम जपना सपना बीता अपना बचपन, अपनों की रक्षा में 14 बरस जागे लक्ष्मण, और मिला सी तपस्या क्या आज है हर महिला इतनी सक्षम। धन देवता कुबेर का था एक नेत्र भस्म, धन का देवता जो था कुबेर, उसका एक नेत्र भस्म था। पैसा तो बहुत है लेकिन भस्म है। धन देवता कुबेर का था एक नेत्र भस्म, आज अरबपति भी है बीमार और जीवन उसका खत्म। पितृभक्त मेघनाद विष्णु वस्त्र इंद्रजीत, आज धन के है लालची, माँ बाप हमसे त्रस्त, कम थे वस्त्र जंगली जीवन लेकिन सर्वगुण संपन्न। आज कपड़े हैं अनेक लेकिन सोच सबकी नग्न, देश कुंभकर्ण सा सोया धनी धन में पूरा मग्न। प्रभु की वापसी पे अयोध्या पूरी प्रसन्न, पंचकन्या पर क्यों लांछन, आज भी यही प्रसंग। जबकि भोलेनाथ के अवतार में शक्ति अभिन्न अंग। भोलेनाथ का अवतार जो था, उसका एक अवतार ऐसा था, उसमें आधी पार्वती आधे भोलेनाथ।
हाँ लग चुकी है जंग, दिमाग हो चुके हैं बंद। नल कुबेर प्रेमी रंबा मदहोश रावण, कत्ल हो रहे हैं रोज लोगों के बदलते रंग। इंसाफ ना मिले तो लोकसभा को कर दो बंग। सारे साथी भ्रष्टाचारी रावणों से भरी संसद, कलयुग की इस सभा में ढूंढो कौन है अंगद। श्रवण के पितृ पाप से कितना बचते दशरथ, मेरी भी तो बातें ही बड़ी बड़ी लेकिन ओछी है हरकत। जय श्री राम सबके मुंह पे उम्र 5 या 55, राम नाम जपना सपना बीता अपना बचपन। अपनों की रक्षा में 14 बरस जागे लक्ष्मण, उर्मिला सी तपस्या क्या, आज है हर महिला इतनी सक्षम। धन्यवाद। Guys, give it up for couple. Okay, we are here to end the afternoon. I don't know why I keep feeling it's an evening. It's a setting, and usually poetry is always in the evening. But this afternoon has been really nice. And jate jate, I just want to sort of leave you guys with something. So I also meditate a lot, and I also teach meditation, a form of meditation. And I believe like in disconnecting and sort of finding yourself completing something, even if it's at the end of the day or something, to just let go. So this is about that. And I want all of you to just close your eyes for this one. And close your eyes and take a deep breath. And exhale. On letting go. A way of life, they say, a precious truth. Something I need to embrace, I need to head this way. Sand slips from my fingers as I watch him love another. The sun says hello again as she never answers my call. Time says, let's move on, there's so much to come another day. But I say, how can I not hold on when these souls have been my passageway? Have been, time said, is a moment of the past. To hold on is nature, and wisdom is to have let gone. You and I are only illusions of the moment, of stones and light, of mirrors and sight. Did you do justice to every little being? Did you seek patience when your mind needed breathing? We come and we go with friends who often become foes, with family who may remain, and may is the word you must retain. Let go, my love, let go of your fight, let go of your pain, let go of your light. Nothing is yours to keep, not a feather, not a stone, not a lover, and not a moan. This too shall pass, as in time everything does. What a wonderful thought it is. What's gone was good, and what's better is yet to come. Thank you. Thank you, guys. And thank you to Habitat for hosting. Thank you to everybody who's here at back, Yash, Harsh. And thanks to yourself for being here. And please keep coming back and performing. For those of you who were first timers, well done.